तो सही प्रोसेस टाको आम कौन कहबा डायापेडेसिस या अमीबा लाइक मूवमेंट। तो एमाने कौन हेबे ब्लड वेसल्स रु टिश्यू को जीवे एंड टिश्यू रे जाईकी अटैक कर पैथोजेन्स मान बुझिगलो। तो दैट इज व्हाई दिस हाइपर सेंसिटिविटी रे तमरा एक्चुअली बॉडी आमे जो इम्यून सिस्टम रे कांसेप्ट कौन देखथिले कि अलग अलग पैथोजेन आसले से अलग अलग बिहेव करे किंतु one of these process is called inflammation। तो आमर हाइपर सेंसिटिविटी रे एलर्जी रे इन्फ्लामेशन टा हुए किंतु एक्साजेरेटेड माने गोटे विशाल काय रूप रे हम। तो सपोज यू आर वेरी सेंसिटिव तो तमे देखिबो कि पूरा देह सारा भी फली जाई पारे एंड समटाइम्स इन केस ऑफ एस्थमा एस्थमा रे कौन देखिबो तमे देखिबो कि से पूरा इवन मनुष्य मर जाई पारे इफ ही इज नॉट यूजिंग हिज स्प्रे। तो मेन चीज ये आपको समझ में आना चाहिए। तो समझ में आया। तो सही पे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस कंसेप्ट इज आईजी टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड प्लस inflammation is produced with the help of histamine and serotonin। हेपारिन कौन करिवो एनी स्ट्रेस जदि हैला तो ब्लड टा क्लॉट हे जिवार चांसेस अछि। तो सेही पे ब्लड वेसल भितरे ब्लड टा क्लॉट ना करू सेही पे हमें कौन करिबा सेही पे हमें व्हाट वी विल डू सो वी विल सिक्रेट हेपारिन। तो हेपारिन होची कौन हेपारिन होची तमर एंटी कोएगुलेंट। नसरीन आईजीई का फुल फॉर्म नहीं होता है। ओके तो आईजीई एक एंटीबॉडी का नाम है। तो आईजी का माने क्या है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये एक प्रोटीन टाइप है समझ में है। एंड ई इज द स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी। तो हमारे बॉडी में 5 तरह के एंटीबॉडीज हैं ए डी ई जी एंड एम। फाइन वी हैव 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन उसका क्या है इम्यूनोग्लोबुलिन। अंडरस्टूड। तो इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए प्रोटीन दैट फॉर्म्स द एंटीबॉडी। ठीक है जी। उसमें अगर ई टाइप ज्यादा हुआ तो पर्सन एलर्जिक को ज्यादा टेंडेंसी रखेगा। सपोज एक पर्सन का आईजी बहुत कम है तो ज्यादा एलर्जिक नहीं होगा। ओके बट अगर एक पर्सन का ज्यादा आईजीई है तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो। अंडरस्टूड। सो लाइक दिस। तो इसीलिए नाउ अब जो वैसोडाइलेशन हुआ ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स माने बाहर वाले ब्लड वेसल्स सो दैट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड विल लीक आउट इनटू टिश्यू। समझे कि नहीं। हमने क्या डिस्कस किया कि आपका ब्लड वेसल्स में जो पोर्स होंगे आई विल शो यू फोटोग्राफ डोंट वरी। ओके मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे ये फोटोग्राफ है। ये देखो ये देख रहे हो इस बच्ची के गाल में कैसे हो गया है। फाइन सो दिस इज बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी। ओके सन एलर्जी हो गया है उसको तो इसे धूप पड़ने से गाल पूरा लाल हो जा रहा है। तो इन्फ्लेमेशन में रेडनिंग होगा। ओके यहाँ आप देख रहे हो स्वेलिंग भी हो रहा है छोटे छोटे स्वेलिंग्स हो रहे हैं। अंडरस्टूड। तो ये साइट करता है कि इन्फ्लेमेशन हुआ हुआ है। तो रेडनिंग भी है स्वेलिंग भी है इवन जरूरत पड़ेगा तो पेन भी हो सकता है। अंडरस्टूड। इट में ऑल्सो है रिजल्ट इन पेन। चलिए तो उसका नेक्स्ट ये देखिए ये आपका जो स्टेप्स मैंने आपको दिखाया है 5 स्टेप्स ऑफ इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले क्या हुआ इंजरी हुआ है देख रहे हो। तो यहाँ इंजरी हुआ है तो कीटाणु घुस रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजन आर एंटरिंग। सो दीज ग्रीन वंस आर सपोज बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन घुस रहा है। तो इसलिए इमीडिएटली क्या होगा मास्ट सेल्स जो हैं ये देख रहे हो मास्ट सेल्स। तो टिश्यू में होगा मास्ट सेल्स। ब्लड वेसल भी अगर इंजर हुआ है तो वहां क्या होगा बेसोफिल सेल्स। ठीक है। तो टिश्यू से मास्ट सेल्स हिस्टामिन हेपारिन सेक्रेट करेंगे एंड ब्लड वेसल से बेसोफिल
हिस्टामिन, हेपरिन, सेरोटोनिन सिक्रेट करेंगे। तो जैसे ही हिस्टामिन आएगा वैसोडाइलेशन होगा। देख रहे हो ये जो ब्लड वेसल, देखो यहाँ पोर साइज कितना पतला है, बट यहाँ पोर साइज बड़ा हो रहा है। अंडरस्टूड? तो जैसे ब्लड वेसल डायलेट होगा ज्यादा ब्लड आएगा। ओके, व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ वैसोडाइलेशन? ओके, मोर ब्लड विल कम। ओके, मोर ब्लड विल कम, पेस ऑफ ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, एंड पोर साइज बड़ा हो जाएगा, लार्ज। तो उससे क्या होंगे? देखो ये आप देख रहे हो किडनी शेप्ड सेल। तो किडनी शेप्ड कौन सा ब्लड वेसल होता है? मोनोसाइट्स। ओके, तो दीज आर ऑल किडनी शेप्ड सेल्स। ये मोनोसाइट, ये आपका न्यूट्रोफिल है। तो मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल दोनों क्या हैं? तो बोथ आर फैगोसाइट्स, है कि नहीं? तो ये जो फैगोसाइट्स है माने कौन हब? से ब्लड रू टिश्यूज को पळेबे, सेठी जाइकी जो पैथोजेन आछिथि तांको गिली जीवे। ओके, वो उनको पूरा निगल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंडोफैगोसाइटोसिस। ओके, तो इट विल टोटली ईट द पैथोजेन, स्वालो द पैथोजेन। आया समझ? तो क्यों वैसोडाइलेशन किया गया? तो वैसोडाइलेशन कर रहे हैं बॉडी ताकि वो डब्ल्यूबीसीज को टिश्यू में भेज सके एंड इंजरी को ठीक कर सके। फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग यहाँ देखेंगे कि आपका जो रेडनिंग क्यों हुआ। अरे भाई ज्यादा ब्लड आ रहा है एक जगह पर तो रेडनिंग तो होगा। ज्यादा ब्लड आ रहा है, टिश्यू फ्लूइड भी ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो स्वेलिंग तो होगा। ओके, सो दीज आर द रीजन व्हाई देयर विल बी रेडनिंग एंड स्वेलिंग। अंडरस्टूड? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन। क्लियर? तो ये देखिए अलग अलग टाइप ऑफ फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाया है। या आप देखिए एक लकड़ी का इंजरी हो गया है, तो आप देखिए बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए टिश्यूज में मैक्रोफेज आ जाएंगे। ओके, तो टिश्यूज में फैगोसाइट कौन है? मैक्रोफेज। ब्लड वेसल से कौन जाएगा? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। समझ में आया? तो ये तीनों मिलकर बैक्टीरिया को खत्म करने का कोशिश करेंगे। फाइन, समझ में आया ड्राइंग? चलिए, तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होता है। ओके, जिसको एलर्जी भी हम लोग कहते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में होता है। सबसे पहला है हे फीवर। तो हे फीवर जो है ये माइल्ड फॉर्म है। तुम देखोगे जैसे हमारा जो माने इन पंजाब दे कट दिस पैडी माने हमर धान काटिला बेलू से माने थ्रेशर मशीन यूज करती, हार्वेस्टर यूज करती। तो ସେଇଠି କଣ ହୁଏ? ଆମର ଏଠି ଗାଁ ଗହଳିରେ ହାତରେ ସେ ଯୋଉ ଦା ନେଇକି କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଯେବେ ଦା ନେଇକି କାଟିଦେବେ ତ ଗଛଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଟୁଛି। ସେମାନେ ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ନେଇ ଯିବେ, ସେଇଥିରୁ ପିଟି ପିଟିକି ଧାନ କାଢିବେ। ବଟ୍ in Punjab, Haryana, all UP, etc., they use harvesters। तो हार्वेस्टर कौन करिवो? से धान गछटाକୁ गुंड 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 करदବ एंड ସେଇଥିରୁ ତମର ଧାନ ଅଲଗା କରି पैकिंग करी गोटे बस्तारे पकेदब। समझ में? ऑन द स्पॉट, कुछ भी बाद में होने का जरूरत नहीं है। दे विल टोटली कट द प्लांट इनटू पीसेस एंड दे विल पैक द सीड्स। तो अब एमती हेले कौन होची? बहुत पैडी डस्ट बाहर, बहुत धूली हुए है। से जो गछ काटला बेलू तार जो गछ धूली गुड़ा जीव। तो हे माने कौन? हे हे इज द पैडी स्ट्र है। नड़ा आमर ओडिया रे नड़ा कहूँ। ठीक अच्छे? तो सही जो पैडी स्ट्र जो उड़े सेटा नाक आखरे बाजिब एंड पूरा ब्रीदिंग करिया कष्ट हो, फुल्ली जीव। ओके, इट विल गेट स्वोलन, रेडेंड, रनिंग नोज, रनिंग आईज सब है। से आखिरे नाकरे जोठी बाजिला सेठू खाली तमर लुह गड़ब है, आखिरे लाल हो सब इन्फ्लामेशन हम। सो दिस इज कॉल्ड हे फीवर। तो हे फीवर इज द अर्लीएस्ट रेस्पॉन्स टू एलर्जी।
है तो अर्लीएस्ट रेस्पॉन्स टू एलर्जी केमिति आमे ठीक करिबा एंटीहिस्टामिन नै जिबा या एंटी एलर्जेन तमे देखिबो इवन जो गरम दिने खास हुए तो खास दी प्रकार है पारे एलर्जिक कफ भी है पारे नॉन एलर्जिक कफ भी है पारे तो जदि एलर्जिक कफ अच्छी तो सही केस रे तमे एंटीबायोटिक खाया किसी दरकार नहीं खाली एंटीहिस्टामिन खाइदेले चलियो से कौन करिवो बॉडी रे हिस्टामिन टाकू कमेई देबो ताहले तमरो इन्फ्लेमेशन टाउ हबो ना क्लियर तार नेक्स्ट स्टेज होची एस्थमा एस्थमा रे तमरो हमर जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स हमर सब ब्लॉक हे अंडरस्टूड प्लस तमरो जो स्वेलिंग्स हे जीवो फॉर एग्जांपल आमे देखिबा एटा होची लंग ट्यूब गुडा हला तो एटा होची लंग रो ट्यूब्स माने तो जेबे पवन टा बाहर की आसुथिबो तो एठी कौन हबो सपोज इन्फ्लेमेशन हे गला हला सपोज ए जो ट्यूब्स गुडा फुल्ली गला ओके तो कौन हे गला तर बाटटा पतला हे गला तो जेबे बाटटा पतला हबो तो आउ जेबे हमर एयर बाहर को आसिया पे चेष्टा करिवो से पूरा दबेई की आसीबो बाट गुडा जेबे से दबेई की आसीबो इट विल कॉज पेन तो जेबे आमे निश्वास छाड़ीबा तो बहुत कष्ट हबो तो सेही पे सेही लोक माने निश्वास ता छाड़ी पारंती एंड इफ दे डोंट टेक एंटीहिस्टामिन इमीडिएटली they will also die तो एस्थमेटिक शॉक हेई जिवो हला तो सेटा तमे देखिछ ना इन द पिक्चर कोडा जो सलमान खान रो मूवी रे नहीं तो सलमान खान रो मूवी रे ता मम्मी जीए दंगल दंगल नहीं दंगल नहीं म कोन से मूवी रो नाटा पर सेइतरे से ता मम्मी को जो सोनू सूद कोन करिवो तार तार इनहेलर टा भांगी दबो तो मार इनहेलर भांगी दे कि तार धूली जति बस अखा अखा झाड़ी की धूली कर देबे तो ता मां एस्थमेटिक शॉक रे मच व्हाई काइना से जो इनहेलर रे एंटीहिस्टामिन ड्रग्स थाए तो से इनहेलर टा भांगी देला से ओके सो दैट इज द कांसेप्ट तो सही पे एस्थमेटिक शॉक रे expiration becomes highly painful because of narrowing of the diameter of respiratory tube हला तो कौन हबो सपोज डस्ट हेले कौन हबो इन्फ्लेमेशन इज स्टिम्युलेटेड तो इन्फ्लेमेशन रे सब फुली फाली जीवो तो इथर कौन हबो डायामीटर of bronchioles become narrower तो ओके तो expiration becomes difficult and painful है तो एक्सपायर करवाटा डिफिकल्ट भी है पेनफुल भी है ना क्योर कौन सपोज वी टेक कौन तमें नहीं गल इनहेलर तब जदि इनहेलर नहीं गल तो सी कौन रिलीज करिवो एंटी हिस्टामिन तो एंटी हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन बंद कर दबो तो जब इन्फ्लेमेशन टा बंद हे जीवो ताले कौन हबो तमरो एई सबु जिंस हबोनी so now you can breathe clean हेगला से पे if a person suffers from allergy he should never forget to carry his कौन इनहेलर बुझिगला तापर तार सबुठु खतरनाक स्टेज होची एलर्जी रो एनाफाइलैक्टिक शॉक तो एनाफाइलैक्सिस इज अनदर नेम ऑफ एलर्जी एडा मन रखथिबो केबे केबे 1 मार्क रो डेफिनेशन आसे व्हाट इज एनाफाइलैक्सिस तो एनाफाइलैक्सिस इज नथिंग बट एलर्जिक रेस्पॉन्स हैला तो एलर्जी को भी एनाफाइलैक्सिस कुहा जाए तो एई तरह सिवियर शॉक हबो so it is an allergic reaction of the involving all tissues of the body
and occurs in few minutes after injection of antigen like penicillin. तो तमे देखिबो सपोज तुमको पेनिसिलिन इंजेक्शन बहुत गुडे एंटीबायोटिक्स नॉट ओनली पेनिसिलिन बहुत गुडे एंटीबायोटिक्स जोटा की बॉडी सेंसिटिव हो जाई पारे तो सेबे से माने गोटे स्किन टेस्ट करंती देखिबो हला गोटे छोटे टिके इंजेक्शन हल्का रे स्किन रे दे देबे तो स्किन रे दे देला पारे 5 मिनिट 10 मिनिट से वेट करिवे देखिबे किछि एलर्जी होउछि ହେଲା सपोज जो जगह रे इंजेक्शन टा देला डॉक्टर सेही जगह रे यदि फळा फळी जीवो बॉडीटा ता माने दैट पर्सन इज सेंसिटिव टू पेनिसिलिन ताले आउ डॉक्टर कोन करिवो से पेनिसिलिन इंजेक्शन दबनी नले भीतर हे जीवो हैला तो सेही पैस ऑल ऑल एंटीबायोटिक्स जोटा कि टिके बॉडी को सेंसिटिव करि पारे ताकू थरे स्किन टेस्ट करिकि देखा जाए हैला जदि किछि हेलानी ताहले दिया जीवो जदि स्किन रे रिएक्शन हबो ताहले आउ दिया जीवो ना ठीक अछि तो सच ए रिएक्शन इज वेरी सीरियस ओके एंड माने इट मे आल्सो रिजल्ट इन व्हाट डेथ हैला बहुत कम समय भितरे लोकटा मरी भी जाई बुझिगला चलो तो तापरे देखुछ पॉलन एलर्जी सपोज गोटे झील को पॉलन या पुओ को पॉलन एलर्जी अच्छी एंड तार गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ताक गोटे फूल देला जदि सुंगिदब से फूल मल्ला मनीष दैट पर्सन विल डाई मे डाई ड्यू टू पॉलन एलर्जी ହେଇଗଲା ତ ସେଇପାଇଁ ଏଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି କି ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ପଲେନ ଆଲର୍ଜି ଅଛି ତେବେ ଫୁଲ ପାଖରେ ଗଲେ ତାର ଖାଲି ଛିଙ୍କ ହବ ଓକେ Now, symptoms of allergic reaction कौन symptoms तो हमें देखिबो sneezing माने excessive sneezing छिंकी छिंकी जोड़ बाहर जीवो तापर आखी पाकी नाकरू पानी बाहरिबो ओके ब्रीदिंग टा टिके डिफिकल्ट हे जीवो so these are all symptoms of allergic response treatment कौन immediately antihistamine नबो adrenaline and steroids भी नहीं जाई पारिबो okay but take all medicines after consultation with a doctor ठीक है एंटी एलर्जेन नहीं जाई पर आगो आमन जो पिला थुलु एविल आस्तुला तो एविल 25 गोटे नहीं गले गला काम शेष किंतु आजिकली एविल यूज होनी अदर ड्रग्स आर यूज्ड तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दैट हे गला डॉक्टर को पचारिबो कि आज्ञा एलर्जी हेले कोटा नहीं हबो ताले एंटी एलर्जेन टा घरे रहिबा बहुत दरकार Hela? Suppose because you if it is a severe shock, you may not have even time to go to the doctor. ହେଲା कि नहीं तो ସେଇ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜେନ୍ ଟା ସବୁବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜେନ୍ ଟା ଭଲ ପଡୁଛି ସେଟା ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଘରେ ରଖ ଓକେ चलिए तो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस आजिकली कौन पिला माने घरे भितरे ही रहउछथि खेला कूदा धूली माटी होउना So that is why they are sensitive to a lot of things. Suppose तम घरे पेट्स अच्छी तो जा घरे पेट्स थिबो बिलेई कुकुर थिबो तो से माने भी कोन इम्यूनाइज हे जानती बॉडी तांकर फाइट करे किंतु एबे कोन होउची सपोज तमे बहुत क्लीन एनवायरनमेंट रहउछ एंड सडनली का घर को गलो जार पेट्स अच्छी तो यू मे आल्सो फेस प्रॉब्लम्स हैला सो दैट इज व्हाई ऑलवेज रिमेंबर कि न्याचुरल रहिबा सबले इम्पोर्टेंट हैला बट आजिकली जेमती लोक धनी हे जाउछंती से माने घर भीतर रहया बेसी पसंद करछंती एसी एनवायरनमेंट रहया बेसी पसंद करछंती तो व्हिच इंक्रीजेस देयर सेंसिटिविटी तो तांके पय छोटो मोटो जिंस भी एलर्जन हे पारे हैला वर्षा हे गला एलर्जी वर्षा न हे कि खरा हे गला एलर्जी हैला धूली हैला एलर्जी धूली न हेले भी सपोज हे गला एलर्जी एंड सो चलिए तो कौन है पारे नाकरे स्वेलिंग ऑफ म्यूकोजा रनिंग नोज स्नीजिंग साइनसेस रे हे जाय पारे एलर्जिक साइनसाइटिस आईज रे रेडनेस एंड इचिंग हबो एयरवेज रे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हे जीवो ओके एक्सपायर करबा कष्ट हे जीवो ईयर्स रे कानडा भर्ती भर्ती लागिवो सुभिबनी स्किन रे रैशेस हे जीवो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एब्डोमिनल प्लेन बोटिंग वॉमिटिंग डायरिया है क्लियर
चलो सो आमर फर्स्ट डिजीज सरला नेक्स्ट विल गो टू इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम तो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम आमे दी प्रकार डिस्कस करूचे गोटे होची स्किड एंड गोटे होची एड्स हैला स्किड होची कोन सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी हे गला एड्स टा कोन एइथरे जो इम्यूनो डेफिशिएंसी हैला आमे निजे किणीचू due to our foolishness we have collected this disease तो सही पे ताकू कुआ जाए acquired immunodeficiency syndrome हैला तो डिफरेंस कोन आंकर एटा बहुत इंपोर्टेंट जानिबा तो डिफरेंस होची इन केस ऑफ एड्स तमर हेल्पर टी सेल काउंट बहुत पड़ी जीवो व्हाई बिकॉज एचआईवी रो होस्ट होची किए हेल्पर टी सेल बुझिगला तो हेल्पर टी सेल आम बॉडी रे कौन करे बी सेल आउ टी सेल रो इंटरैक्शन कराए माने बी सेल कौन आम जानिचे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम टी सेल कौन कराए सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम तो जदि आमर हेल्पर सेल अच्छी तो बी सेल देखिले दी जण बाड़ेबे टी सेल देखिले दी जण बाड़ेबे बुझल कहना हेल्पर कौन करिवो बी रु कथाटा टी को कहिदबो आ टी रु कथाटा बी को कहिदबो से कोऑर्डिनेटेड इम्यून एक्शन करिवो भलरे मिसी के बाड़ेबे बट जदि हेल्पर टी सेल काउंट पड़ी गला बी सेल देखिले बी बाड़ेबो टी हेल्प करिवनी टी सेल देखिले टी बाड़ेबो बी सेल हेल्प करिवनी तो तमरो 50% रेस्पॉन्स हबो तो इट इज नोन एज इम्यूनो डेफिशिएंसी हैला तो तमरो इम्यून सिस्टम रा रेस्पॉन्स टा कमी गला क्लियर बट स्किड रे कौन होची बोथ बी एंड टी सेल्स आर नॉट प्रेजेंट एटा डिफरेंस हैला तो जदि बी नाही टी नाही तो लड़िबो किए किंतु एड्स रे खाली हेल्पर टी सेल कमी जाउची तो सेही पई आमर बी जो टी बी टी को कहउतला एंड टी बी को कहि की दी जण बाडाउते सेटा हबो ओके तो बी देखले बी बाडेबो टी देखले टी बाडेबो नो कोऑर्डिनेटेड एक्टिव तो सेही पई एड्स टू स्किड टा खतरनाक माने स्किड्स टा इमिडिएटली भी मरी जिवार चांसेस अछि किंतु एड्स रे एते शीघ्र के मरिबो नाही हला किंतु मरिबो ग्यारंटेड अंडरस्टूड एड्स इज ए वायरल प्रॉब्लम इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस बट स्किड टा टू सम एक्सटेंट जेनेटिकल हला माने तार देह रे से एंटीबॉडी माने जो सेल उडा आसी ही नाही ओके तो सेही पे कौन हबो हाउ टू सर्वाइव तुमको जर्म फ्री एनवायरनमेंट रे रहिया हैला तो यू हैव टू स्टे इन जर्म फ्री एनवायरनमेंट माने गोटे एई बळा बॉल भीतर रहिबो जो भीतर को भी पैथोजेन पस अंडरस्टूड तो दिस इज द कंसेप्ट तो तार डिटेल तो स्किड आमे नहीं आमे एड्स डिटेल टा डिस्कस तो व्हाट डज एड्स स्टैंड फॉर एटा गोटे क्वेश्चन नीट रे तमरा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक्वायर्ड माने आमे निजे किनिचू इम्यूनो डेफिशिएंसी माने इम्यून सिस्टम इनएफेक्टिव हे जीवो सिंड्रोम माने बहुत सिम्पटम्स देखे मेगला तो दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम तो इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज माने एटा आमे का माने आम माँ बापा ठू आनिनु इट इज गॉट बाय व्हाट सम अदर मिस्टेक्स when conducted by the person हैला तो कॉन्जेनाइटल ट्रांसफर आजिकली भी आउ माने हे गेलानी तो इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज माने माँ ठू आसियार चांसेस कम AIDS was first reported in USA amongst homosexuals in 1981. Okay, so say पे अराउंड 25 मिलियन लोग
ओके माने माने किछि वर्ष रे मरिछन। Okay, in AIDS, India was detected in AIDS. In India, AIDS was detected in 1986. तो या टिके मन रखिबो 81 रे हैला यूएसए रे 1986 रे डिटेक्ट हैला इंडिया रे। पैथोजेन के ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस दैट इज कॉल्ड एचआईवी। ओके सो एचआईवी टा कोन गोटे रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस माने कोन कहला रेट्रोवायरस माने जीनोम होची आरएनए and it has reverse transcriptase enzyme। बुझिगला माने सिए आरएनए रु डीएनए करी पारिबो। ओके तो retroviruses are viruses which have RNA as genome and it has reverse transcriptase enzyme। ठीक अछि प्लस तार बॉडी रे तमे एमती छतु भलिया देखिबो कोन स्पाइक्स। तो दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। तो इधर जो ऊपर गोलटा अछि दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन 120 डाल्टन ओके किलो डाल्टन एंड एटा होची ग्लाइकोप्रोटीन 41 बुझिगला। तो सेपा को जीपी कुआ जाए तो जीपी 120 केडीए एंड जीपी 41 केडीए हैला तो जो छतुर स्पाइक टाକୁ କୁହାଯାଏ। ठीक अछि नाउ इट हैज टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैला दीटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अछि एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी अछि हैला। तो दिस इज द केस। तो एचआईवी कंसिस्ट ऑफ ए कोर आरएनए with reverse transcription surrounded by a protein coat. The protein coat around the core consists of P24 proteins. Hello? And outside the protein coat is a layer of composed of another protein P70। एटा मो ड्राइंग रे तुमको देखैबी बहुत इंपोर्टेंट। एचआईवी रे ड्राइंग इज वेरी इंपोर्टेंट एट देखो। तो आमे भितर देखि देबा तापर बाहर से पढिया। सो एटी कोन देखुछ तमे तो these are the what तो these are the two RNA genomes हैला। तो न्यूक्लियोकैप्सिड लिखाई छे एटा। सो दिस इज योर कोन तो वायरल आरएनए जीनोम। तो दिस इज योर वायरल आरएनए जीनोम। ओके तो एटा होची सिंगल कोन दिस इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए केतेटा दीटा। ओके ता संगे कौन अच्छी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये जो रेड रेड गुड़ा देखे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कौन करिवो एई आरएनए को कन्वर्ट कर दबो डीएनए रे। तापर इंटीग्रेज एंजाइम कौन करिवो वायरल डीएनए को जॉइन करैबो विथ होस्ट डीएनए बुझिगला। तो से वायरल डीएनए को नहीं की होस्ट डीएनए रे जोड़ दबो फाइन। तो दिस इज द कंसेप्ट। तापरे एटा होची से जो मु कहिथि छतु वाला स्पाइक प्रोटीन एइतरे जो बाहर टा को जीपी 120 कुआ जाए एंड ए जो ग्रीन टा को जीपी 41 कुआ जाए हैला। नाउ ए जो जीपी 120 इज कॉम्प्लीमेंटरी टू कौन भैया तो जीपी 120 ऑफ एचआईवी is complementary to CD4 receptor बुझिगला। तो CD4 रिसेप्टर भलिया सेटा लागिबो। तो जोड़ CD4 प्रोटीन सॉरी CD4 प्रोटीन हैला। तो इट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू CD4। तो से पे जो सेल रे CD4 रिसेप्टर थिबो सेइथरे एचआईवी जाकी बाइंड कर हेगला। तो CD4 रिसेप्टर हमर कोथरे अछि तो CD4 रिसेप्टर्स ओके तो CD4 रिसेप्टर्स हमर कोथरे अछि मैक्रोफेजेस एंड T helper cells। Therefore they are hosts of HIV in our body। तो एमाने जो हेल्पर सेल और मैक्रोफेज
एमाने आम देहर विभीषण। तो ସେମାନେ କଣ କରିଲେ? HIV କୁ ଆଣିକି ଆମ ଦେହରେ ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ଟୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ। ବୁଝିଗଲ? ଚାଲ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି କଣ, ତ ୱାଇ HIV ସ୍ପେଶାଲ। ତ ଏଇ ଦେଖୁଛ କି ନା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାପସିଡ, ତ ଦିସ୍ କ୍ୟାପସିଡ ଯୋଉଟା ତମେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାପସିଡ, ତ ଏଇ କ୍ୟାପସିଡ ରେ କୋ ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ତ ଏଇ କ୍ୟାପସିଡ ରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ କୋଡ ଅଛି। ଦେଖୁଛ? ତ ଦିଜ ଆର ଟୁ ପ୍ରୋଟିନ କୋଡ୍ସ। फाइन। तो এই जो प्रोटीन कोट अच्छी तापर एटा होची लिपिड बाइलेयर में। तो सेई पे कौन हबो? सपोज एटा होची गोटे मैक्रोफेज हैला, एंड एटा होची हमर एचआईवी। तो एचआईवी रे डॉकिंग हे गेला पारे एटा भी लिपिड बाइलेयर, एटा भी लिपिड बाइलेयर। तो मझिरे कौन हबो? तो एटा खोली जीव लिख देला। So এটা कौन ହେଇଯିବ? So there will be an opening ହେଲା, ଏଇଟା ଫିଟିଗଲା and ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇରସ ର ଲିପିଡ କୋଡ and ତା ଭିତରେ ଭାଇରସ ଅଛି ଆମର। ତ ଏବେ ଓପନିଂ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏଇ ଭାଇରସ ଟା ଏଇ ଭିତରୁ ପଳେଇବ। ବୁଝିଗଲ? So this is called endopinocytic induction। माने how HIV was taken to our cell as drinking। पिनोसाइटोसिस माने कौन? सेल ड्रिंकिंग। तो आमर बहुत छोट छोट वायरसेस आर वेरी स्मॉल, सो इट इज जस्ट लाइक वाटर। तो आमर मैक्रोफेज हे गला, मैक्रोफेज हे गला या टी हेल्पर सेल हे गला, ए माने वायरस टा को पी गले। बुझिगला? तो सेई पे एचआईवी टा होची डेंजरस, कारण तार बाहर कोटटा होची लिपिड, से पे लिपिड लिपिड भाई भाई हे के एंडोफैगोसाइटोसिस होची एंड जो प्रोटीन कैप्सिड टा भितरु पळे। क्लियर? तो सेई थरे आमे कोन डिस्कस करथिले, सी हियर। तो एई देखो, तो एइडा होची P17 प्रोटीन्स हैला, एंड एई जो भीतर कैप्सिड टा होची P24। जदि आमे एई थे देखिबा, तो एइटा कोन हे जीवो? सो दिस इज P17 and एटा हे जाउची P24। बुझिगला? तो व्हाट इज 17 and 24? इट इज वेट इन किलो डाल्टन। हे गला? तो ओजन इन किलो डाल्टन। तो बुझिगला? तो सेई पे स्पाइक प्रोटीन रे GP120 GP41 अछि, बिकॉज दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड कैप्सिड ता तयारी हेजी P17 and P24 बिकॉज दे आर प्रोटीन। दीटा आरएनए अच्छी एंड दीटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अच्छी हैला। तो दिस इज द केस। तो एई जो एटा होची रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ग्रीन टा कोन? ग्रीन टा होची इंटीग्रेज एंजाइम। तो दिस ग्रीन वन इज इंटीग्रेज एंजाइम। तो आई विल वेट फॉर 5 minutes 2 minutes। तमे एई ड्राइंग टा करि दियो प्लीज। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ड्राइंग हैला, कहना ए ड्राइंग तमे इवन बहुत भलो भलो बहिरे भी न पाई पारो। ओके, से पे प्लीज ड्रॉ दिस ड्राइंग। आई एम गिविंग यू 2 minutes। कहना तुम आइडेंटिफाई द डायग्राम भी आसपारे।
ହେଲା ସବୁ ବଢିଆ कर दियो बाहर होची लिपिड बाइलेयर सेइथरे दी प्रकार स्पाइक प्रोटीन अछि हैला छतुर मुंडटा कुआ जाउची 120 एंड छतुर जो बाडीटा कुआ जाउची जीपी 41 तापर गोटे प्रोटीन कोट अछि मेड अप ऑफ P17 तापर आ गोटे प्रोटीन कोट अछि मेड अप ऑफ P24 ता भितरे दीटा आरएनए स्ट्रैंड अछि दीटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अछि एंड दीटा इंटीग्रेशन अछि क्लियर चलो सो लेट्स गो अहेड एटा आ गोटे ड्राइंग हैला now this is the mechanism how this virus attacks and this is also given in your NCERT book तो देखुछ एटा होची रेट्रोवायरस तो रेट्रोवायरस रे वायरल कोर अछि तो एबे इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल तो एटा को सेल तो प्रथमतर फर्स्ट इट विल बी मैक्रोफेज हैला नंबर 1 होची मैक्रोफेज नंबर 2 होची टी हेल्पर सेल हैला ए दी जण को से इन्फेक्ट करि परिबो ओके जिमिति से डॉकिंग हैला दिस इज कॉल्ड डॉकिंग माने CD4 रिसेप्टर को बाइंड करला किए को बाइंड करला GP120 ओके सपोज आई विल ड्रॉ ए ड्राइंग तो सपोज एटा होची मैक्रोफेज तो मैक्रोफेज रो एटा होची CD4 रिसेप्टर हैला CD4 रिसेप्टर तो एबे कौन हबो जेहेतु GP120 लुक्स लाइक CD4 तो एबे कौन है जीवो जो वायरस अछि तार एटा छतु GP141 एटा GP120 GP41 GP120 से आसके संग बाइंड करला ता एटा होची लिपिड बाइलेयर ता भितरे आमे गोटे प्रोटीन कोट कर दबा ता भितरे आमे आउ गोटे प्रोटीन कोट कर दबा ता भितरे आमे दीटा आरएनए देखेदा तो नाउ दिस HIV it will be ingested by the macrophage तो एबे कौन हबो किछ समय परे एई जो वायरस टा कौन हबो से भितरु पळेइबो तो तमर कौन है गेला वायरस टा तो एटा होची तार आरएनए ता भितर होची तार इनर प्रोटीन कोट ता भितर होची तार आउटर प्रोटीन कोट एई वायरस टा भितरु पळे आसे हैला ता माने कौन इट इज नाउ प्रोटेक्टेड फ्रॉम आवर immune system by our own cell ହେଲା ଆମର ही मैक्रोफेज ଆମର ही हेल्पर सेल ताकू बंचेइले ହେଲା नाउ जेमिति से भितर जीव वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस कर दबो नाउ दिस वायरल आरएनए इज कन्वर्टेड टू वायरल डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ए वायरल डीएनए आसकी हमर ह्यूमन डीएनए संग मिसी तो सपोज एटा होची हमर मैक्रोफेज सेल हैला तो एटा होची मैक्रोफेज सेल और एटा होची हमर डीएनए तो से कौन करिवो ता डीएनए टा हमर डीएनए संगे मिसई दबो हैला सपोज दिस इज द वायरल डीएनए and this is again our DNA बुझिगला तो एटा होची कौन ह्यूमन डीएनए बट ए जो ब्लू अंशटा कौन एटा है गेला वायरल डीएनए तो वायरल डीएनए टा कहा पे काम करिवो वायरस पे सेही पे वायरल डीएनए को हमें कौन कहूचु प्रोफेज प्रोफेज माने कौन पर वायरस है गेला तो ए जो वायरल डीएनए जीव
होस्ट मेसिनरी यूज करिकी ट्रांसक्रिप्शन करिबो। ट्रांसक्रिप्शन करी कौन करिबो? वायरल प्रोटीन्स तैयारी करिबो। वायरल आरएनए अगर ट्रांसक्रिप्शन आगो करिया तो आग ट्रांसक्रिप्शन है तो ट्रांसक्रिप्शन रे कौन हबो? वायरल आरएनए प्रोड्यूस हबो। सेइथुरु आमे वायरल प्रोटीन्स तैयारी करिबा। तो आमर कौन है गला? वायरल आरएनए है गला एंड वायरल प्रोटीन है गला। तापर असेंबली करिकी आमे डॉटर वायरस करदबा। डॉटर विरियंस एंड होस्ट सेल टाକୁ फटेकी बाहर पड़े। बुझिगला? तो व्हेन द वायरस कम्स इन कांटेक्ट it releases its RNA into the host cell and reverse transcriptase। दीटा जाक को पठे दबो से कौन कौन छाड़िबो? तो इन्फेक्शन हैला परे वायरल आरएनए आसिला प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट आसिला प्लस इंटीग्रेज आसिला हे गला। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरल आरएनए को वायरल डीएनए कर दबो। इंटीग्रेज वायरल डीएनए को इंटीग्रेट कर दबो विथ होस्ट डीएनए। बुझिगला? तापरे आमर सेल्स र पूरा इंडस्ट्री को यूज करी के तार प्रोटीन्स तैयारी करिवो, तार आरएनए तैयारी करिवो एंड डॉटर वायरस है कि बाहर। क्लियर? नाउ मैक्रोफेजेस कौन? तो मैक्रोफेजेस आर एमीबॉयड सेल्स। एमीबॉयड सेल्स तांकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन is habituated for breaking and rejoining हैला काइना से फागोसाइटोसिस करूची एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस करूची। तो से तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेढ़ा मेढ़ा हब कटिबो जोड़िबो कटिबो जोड़िबो कटिबो जोड़िबो। तो सेही पई जेबे डॉटर वायरस सब बाहरिले ये मेम्ब्रेन टा कोन हला छिंडिला आउ थे जोड़ी हे गेला। तो जेहेतु से भांगिकी जोड़ी हे पारुची मैक्रोफेज काउंट डज नॉट फॉल। बुझिगला? तो जदि इम्यून सिस्टम रे देखिबो मैक्रोफेज रो काउंट टा कमे नाही। काहे की काना सेडा गोटे फैगोसाइटिक सेल से जोड़ो भांग तार अभ्यास। किंतु जेबे सी हेल्पर सेल भीतर को पहुंचे तो नाउ वायरस आसिला एंड नाउ इट हैज अटैक्ड कौन? टी हेल्पर सेल। तो हेल्पर सेल विल ब्रेक एंड कैन नॉट join। therefore T helper cell count falls। बुझिगला? तो सेही पे जदि एचआईवी आम देहरे अच्छी ताले हेल्पर सेल काउंट टा कमी 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 हे गला। एट हेल्पर सेल कमी कमी गले कौन हबो? हमर इम्यून सिस्टम टा कोऑर्डिनेटेड हबो। बी देखले बी मारिबो टी देखले टी मारिबो। तो दैट इज व्हाई आमर कौन हे गला? इम्यूनो डेफिशिएंसी हैला। तो एड्स इज नॉट ए डिजीज। एड्स रे के मरेनी। एड्स तम इम्यून सिस्टम टा को जीरो कर दो। तो एड्स इम्यून सिस्टम जीरो कर देले कौन हबो? तुमको सर्दी खासरे भी मर जीव है कि नहीं? कारण बॉडी फाइट करबनी। तो बॉडी न फाइट करले सबू कीटाणु षंड भाई एक्टिंग करेंगे दे विल एक्ट एंड दे विल किल। अंडरस्टूड? सो प्लीज रिमेंबर एड्स सपोज एड्स पेशेंट को हम जदी माने जर्म फ्री एनवायरनमेंट रखिबो से जीवन जाका बंचिबो किछ असुविधा नहीं। सो पीपल हु आर एट सो दिस इज अ कांसेप्ट नाउ। तो एटा तो हम डिस्कस करले। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन? तो हाउ डू वी गेट एड्स? सबुठू इंपोर्टेंट होची सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन हे गला। तो जदि किछि भूल करिच जीवन रे ताहले एड्स आसीबो। ओके नाउ तो इसीलिए दैट इज द कंसेप्ट। नाउ
आफ्टर एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसमिशन मेकानिज्म होची सेक्सुअल कांटेक्ट किंतु केबे केबे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेलू भी हेई पारे सपोज आजिकली तो एटा बहुत कम चांस जनरली कौन हुए हमर जो ब्लड नहीं की स्टोर करा हुए द ब्लड बैंक शुड एंश्योर दैट इट इज एड्स फ्री ओके आई डोंट नो हमारे जो कैंप वैम्प लगे जो कैंप वैम्प जो लागुची सेठी से माने एड्स फ्री करूचंती कि नहीं वी डोंट नो बट इट इज अ प्रोटोकॉल कि जदि ब्लड कलेक्ट करा होची तार एचआईवी टेस्टिंग हबो एंड ताकू तापर रखा तो सपोज आमे एचआईवी टेस्टेड लैबोरेटरी रु ब्लड आनिबा ताहले किछि असुविधा नै किंतु जदि अदरवाइज एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड अच्छी एंड ताकू ट्रांसफ्यूज करा गला so then the recipient will also suffer from it ठीक अछि थर्ड केस होची ड्रग यूजर्स तो से माने जो इंजेक्शन यूज करती if you share injections so there is a chance of getting contaminated हैला सपोज गोटे एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट ड्रग्स नेला तापर तमे ताठू नै कि लगेला so then you may also get the HIV from infected mother to her child through placenta हैला तो आमे इन्फेक्टेड मदर रु चाइल्ड को देई पारिबा ओके now so this is the case so who are at risk so people who are at high risk काकू हेबार बेसी चांस अछि multiples with individual with multiple sex partner सुनो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रहिले एचआईवी हबो बोली किछि माने नाही एचआईवी केबे हबो जब सेई भितरु किए गोटे इन्फेक्टेड ताले से कोन हबो से पूरा सर्कल टाको एचआईवी देई दबो so that is why please remember if suppose जेमति आगो काले कोन होतला गोटे राजा रा हजार रानी रहउतले किंतु से हजार टा रानी एंड राजा दे वर ऑनेस्ट टू ईच अदर तो सेई पई किछि असुविधा नथिला किंतु एबे जब तमे 10टा झियो संगे रिलेशन रखुच ताले से काई 10टा पुओ संगे रिलेशन रखिबनी तो जदि इमिति हैला सपोज यू आर इन्वॉल्व विथ 10 they are involved with 10 ता माने you are involved with 100 if they are involved with 10 then you are involved with 1000 if they are involved with another 10 then you are with 10,000 बुझिल कि नहीं ताकू विशियस सर्कल कहती भूल काम करिवो जदी तो रोग आसी जिवार चांस so if one of your multiple sex partner is an HIV patient then the person will also get ड्रग एडिक्ट्स कौन दम मारो दम मिट जाएगा तो सही जो इंजेक्शन देवा नेबारे गड़बड़ हो जाई पारे ओके इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रैपिड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन माने जो पेशेंट मानको बेसी थैलासेमिया हला एमती तांको बेसी रक्त दरकार पडुची एंड से माने एचआईवी फ्री रक्त नहीं नाहंती ताहले भी गड़बड़ हो जाई पारे चिल्ड्रन बोर्न टू एचआईवी इन्फेक्टेड मदर हैला तो दैट इज द केस खाली गोटे लोक संगे तमे कथबार्ता करूच टच करूच हैला तो यही सब रे स्प्रेड हुएनी एचआईवी ओके so this is the very very important concept and सबुठ बड़ा असुविधा एचआईवी रे कोन तार एसिम्प्टोमेटिक स्टेज बहुत अछि माने वायरस तम देहरु आसीबो एंड सिम्पटम्स देखैबो that gap that period of latency ताको हमें latent period कहू या तमे incubation period कहि दे पारो it is very big so suppose in 2010 you had a wrong sexual contact you may get the disease in 2020 हैला तो सिम्पटम टा 2020 रे आसीबो तो जे बहुत थर कोन हुए एई मझी रे you know you are not infected तो तमे कौन तमे आउरी 50 लोक संगे इंटरेक्ट करि परिबो तो अजणा रे यू हैव गिवन द डिजीज टू अनदर 50 पीपल so that is why this is very very dangerous काहे कि ना जेहेतु लैटेंसी अछि लोक इग्नोरेंट हे जा हैला
चलो तो अब मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी राइट। तो मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर सेल दे एक्ट एज फैक्टरीज। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी है जीवो। तो ड्यू टू डिक्रीज ऑफ हेल्पर टी सेल्स below 200 per mm³ blood, the person starts suffering from opportunistic infections. छोट मोट रोग लाइक माइक्रोबैक्टीरियम वायरस फंजाई टॉक्सोप्लाज्मा एमती छोट मोट रोग हम। तो इवन एड्स विक्टिम हैव persistent diarrhea and susceptible to toxoplasma, TB, candidiasis, okay, cytomegalovirus, herpes, etc. So माने the person will not die due to AIDS. The person will die due to some opportunistic infection. ହେଲା। डायग्नोसिस केमती करिवो ताकू डिटेक्ट करिया पे एलाइजा यूज करा जाए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एंड कंफर्म करा जाए वेस्टर्न ब्लॉट। एटा मन रखथिबो एलाइजा इज ए इंडिकेटरी टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट। सपोज गोटे पिला HIV रो एलाइजा पॉजिटिव हैला तो ताको आथर वेस्टर्न ब्लड करा जीवो। तो वेस्टर्न ब्लड पॉजिटिव हेले आमे कहबा इन्फेक्टेड, न हेले नॉट। तो ट्रीटमेंट रे देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ HIV रे माने ही मृत्यु। किंतु यस आमे टिके समय किनी परिबा। तो देयर आर मेडिसिन्स व्हिच कैन डिले योर डेथ। तो लाइक जिडोवुडिन एजिडोथाइमिडिन एवडा सब यूज होउछ हैला। Prevention, you have to be, prevention is avoid sexual contact with wrong people. Okay, if you are having, please use condoms. Testing करके blood नब blood रखिब। Okay, don't use others needles, always carry your own needle, syringes for vaccination, injection, etc. Okay, controlling drug abuse, advocating condom use, है तो ये सब जिनस इम्पोर्टेंट। तो 1 डिसेंबर इज नोन एज वर्ल्ड एड्स डे एंड NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एमाने सबू ताकू प्रोटेक्ट करिया सहायता कर हेगला। सो दीज आर द कांसेप्ट्स। सो नाउ इफ यू वांट वी कैन हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Nasreen, you want to take practice questions? फटाफट। एड्स इज कॉज ड्यू टू, क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी चैट में बोलो। यू कैन स्विच योर सेल्फ ऑन एंड टॉक। What is the answer of AIDS? Yes, somebody is telling the answer. Ravenshaw HSS 1. Very good. So AIDS is caused due to reduction in number of helper T cells. Excellent, my dear. तापर पड़ा सो एड्स वायरस हैज कौन हो जेनेटिक मटेरियल कौन एड्स वायरस रा फटाफट कुह। यस वेरी गुड। अगेन रेवेंशा HSS is leading single stranded RNA. Very good. दीटा अच्छी माने तमे डबल स्टैंडर्ड कहि दबनी। दीटा अलग अलग अच्छी ना सेहि पे दैट इज 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो अगेन HSS रेवेंशा इज करेक्ट। आंसर इज 3। थर्ड आंसर को एड्स स्प्रेड्स ड्यू टू। अरे वेरी गुड। आज रेवेंशा HSS पिला पूरा बढ़िया ब्रेकफास्ट करके आछंती। अगेन द आंसर इज वेरी गुड। ओ सॉरी 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 सॉरी, द आंसर इज करेक्ट। तो से माने कहउचंती तो से माने कहउचंती कोड वाला यस। नाउ थर्ड आंसर होचंती ऑल ऑफ दिस करेक्ट। ओके, बट मेनली जदी पचार थांता एटा हेई थांता 1। ओके, नाउ अगेन एरा आंसर एलाइजा रा तो HIV। तापर एटा को चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स। फटाफट। Very good, Revensa HSS. Very good. Nupur Sarangi is telling third. Nupur, are you telling for this question? Choose the incorrect statement. Arpita is also telling third. एटा को क्वेश्चन पे कहउछ रेवेंशा HSS 4 कहउची। तो इनकरेक्ट वायरल जीनोम इज कन्वर्टेड करेक्ट।
It is caused by invalid correct. It is an immunodeficient correct. HIV selects and infects and kills B lymphocyte. No, correct. Very good. Very good, Nasreen. Very good, Ravensha. Very good, Nupur. So the answer is 4. AIDS was first reported in rocket speed रे कुआ. NEET रे मेरा हमको एकदम धड़ आंसर कर यार. Yes, Ravensha. Very good again. The answer is USA. Nupur Sarangi, it's not 3, my dear. SCSS, आज एबे SCS फॉर्म को आसीला. So SCS HSS पूरी is again telling 1. Very good. चलो, अरे आंसर करले मजा आसीबो ना. Which one of the following statement is correct with respect to AIDS? Ko. Who has the answer? Ravensha is again telling 1. No, quota 1 ko. No, it next ko ita. Which one of the following is correct with respect to AIDS? Correct with respect to AIDS? Yes, Ravensha. Farhat Khan is telling 2. AIDS, no, my dear. Ravensha and Nupur, you are correct. Causative HIV attacks T helper cells, thus reducing their number. Hello? Hello, good. Enzyme responsible for replication of HIV in macrophages. Whatever. Enzymes responsible for replication. Yes, somebody has the answer. Shashritak. Farhat is telling 3. No. Ravensha is telling 4. It is correct. Reverse transcriptase. Can a reverse transcriptase hele viral RNA ta viral DNA habo तापरे इंटीग्रेज एंजाइम टा नहीं की ताकू होस्ट जोड़ी दो हैला तापरे हमें होस्ट एंजाइम्स यूज करी आफ्टर एंटरिंग टी सेल एचआईवी फर्स्ट फॉर्म्स कौन यस फटाफट आंसर करो नेक्स्ट कौन करिबो यस नसरीन इज करेक्ट Sesta Khanam is correct. Lakshmi is correct. That is called single-stranded DNA. Can a single-stranded RNA ru single-stranded DNA habo. तापर से दी जो ना जोड़ी है कि double-stranded DNA है बे. Clear? Because if our genome is double-stranded, तो ता संगर single-stranded DNA जोड़ी हबो नहीं. Now, which of the following cancer is most likely to be associated with HIV? पहला that is called Kaposi sarcoma. Okay. Yes, Nupur, very good. Kaposi sarcoma. Chale, thank you. Thank you for this beautiful concepts. So now we will go into next disease that is called cancer. Hala? तो अब हमें कैंसर को डिस्कस करिबा. Fine. So now we will go to cancer. So now cancer is one of the most dreaded diseases and आजिकली बहुत बेसी spread करलानी. Millions of Indians are suffering from cancer and a lot of them die annually. So what is cancer? Actually हमारे body रे कौन हुए? Suppose गोटे injury हैला. So cell will divide to replace the injury. हैला कि नहीं? तो हमारा suppose 1000टा सेल मरी गले ताहले 1000टा सेल तैयारी हेबे एंड से इंजुरी टा को रिपेयर करी हैला. तो नॉर्मल सेल्स कौन सपोज एटा होची हमर इंजुरी ना एटा होची इंजुरी हैला. तो एटा घाटा हेची सपोज एटा होची स्किन हमर ओके एटी घाटा हे गेला इंजुरी हे गेला माने एति की चिरी गेला देहटा. एबे कौन हबो नाउ द सेल्स विल स्टार्ट रिप्लेसिंग रिप्लेस करी 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 की जिमिति से माने इंजुरी संगे कांटेक्ट रे आसीबे हैला. तो इमीडिएटली कांटेक्ट इन्हिबिशन हे. So cell will divide and divide and divide and divide to produce numerous cells which will produce the repair and जेबे repair जाए कि normal skin संगे जोड़ी है जीवो contact inhibition है माने cell division will stop. बुझला
तो सेही पे जदि आमर काम हेई गला ताहले आउ करने कौन दरकार। तो वंस द रिपेयर इज करेक्टेड आउ सेल डिविजन हब। बट कैंसर सेल्स कौन से माने एई कांटेक्ट इनहिबिशन टाको भूली जाइछे। So they keep dividing and dividing and dividing and dividing and dividing, and there is no stop. So that is why you will find growth of tumors. Suppose our घा ठीक है गला आउरी सेल तैयारी होची. So what will happen? A big lump is produced. So this is actually called a tumor. ବୁଝିଗଲ। ତ କାହିଁକି ଟ୍ୟୁମରଟା ହେଲା କାହିଁକିନା ସେଲ୍ସ ଫରଗେଟ୍ ଇନହିବିସନ ଷ୍ଟପ୍ ସିଗ୍ନାଲ କୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ହେଲା। ତ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସିଗ୍ନାଲ କୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରନ୍ତି and they keep dividing and keep dividing and keep dividing and keep dividing without any purpose. So this solid bunch of cell is now called a tumor. तो ये जो ट्यूमर आमर अलग अलग प्रकार हम गोटे है बेनाइन। तो बॉर्न इन फ्रेंच फ्रेंच रे बॉर्न माने होची गुड गुड माने हार्मलेस हैला। तो आमर बेनाइन ट्यूमर टा कौन इट इज हार्मलेस ट्यूमर। तो सी खाली गोटे असुविधा दुसे बट इट इज नॉट कॉजिंग एनी डिजीज इट इज नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम इफ इट इज एक्सटर्नल बाहर यदि ब्लड वेसल भीतर ट्यूमर हो गला ताले ब्लड सप्लाई टा ब्लॉक कर दबो एटा गड़बड़ करि पारे। किंतु इफ देयर इज अ ट्यूमर आउटसाइड देयर इज नो प्रॉब्लम। किंतु केबे केबे कौन हुए ए बेनाइन ट्यूमर्स गुड़ा भांगी जाई कि सेल्स गुड़ा ब्लड रे लिम्फ रे बोही जिबे जोठी जोठी सेटल करले सेठी सेठी आउ गोटे ट्यूमर तैयारी कर देबे। Understood? So, eta suppose this is a lump of cells. It will break into numerous small lumps. It will go with blood. Hela, go with blood. Deposit in other tissues and produce new tumor. तो आपको कहा जाए नियोप्लाज्म एंड ए जो फ्लो टाको कहा जाए मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस बुझला। तो सही पे इफ ट्यूमर starts to metastasize and then it will go and produce new tumor in many places. So this is now called malignant tumor माने एटा एबे खतरनाक काई। सपोज गोटे ट्यूमर थिला एबे लक्षटा हे गला एठू भांगी की सपोज 1000 कोटी हे जीवो एंड सो ऑन। तो अगर हम एक नहीं मार पाए तो लाख कैसे मारेंगे बुझला। तो सही पे एबे मैलिग्नेंसी हे गला। मैलिग्नेंसी माने कौन मैलाइन माने गंधिया। तो एबे सीए स्प्रेड करिवो एंड 12 जगह रे नुआ ट्यूमर तैयारी करिवो and this step continues. So that is why the person is severely affected. Now, so what are the concepts? So ଆମର जो genes ଅଛି तो we have carcinogens. Okay, ଆମର कौन होची in case of our body, so everybody has pre-cancer genes. ହେଇଗଲା। तो ଆମର जो बॉडी रे प्रोटो अंक्स ताकू कहा जाए प्रोटॉन्स। So what are protons? These are pre-cancer genes. So they are inactive. हैला। तो almost every person has proto-oncs or inactive cancer gene. तो ये जो inactive cancer gene टा अच्छी ସେଇଟା कौन ସେଇଟା हार्मफुल नुह किंतु
जेबे एई इनएक्टिव जीन को आमे किछि कार्सिनोजेनिक एजेंट्स कार्सिनोजेंस साଙ୍ଗरे इंटरैक्ट करेबा दिस विल बिकम ऑन्कोजीन्स और एक्टिव कैंसर जीन्स बुझीगल। तो सेई पे जो पर्सन इज व्हाट इज क्लोज टू कार्सिनोजेन्स जो माने कार्सिनोजेन्स कांटेक्ट रे आसंती तांकर कार्सिनोजेनेसिस हे जाए या कैंसर टा एक्टिवेट बुझीगल। सो दिस इज द केस। तो व्हाट आर carcinogens? Physical agent like X-ray, gamma ray, UV rays एमाने डीएनए डैमेज करत तो सेई पे दे विल कन्वर्ट प्रोटॉन्स टू ऑन्क्स। केमिकल एजेंट्स लाइक टोबैको स्मोक हैला हमरो तमे मन अछि जो हमरो गोटे मार्केट रे तमरो कलरिंग एजोडाइज हैला एजोडाइज तमे देखिबो एकदम नाली रंगर पकुड़ी करके रखिथिबे ओके ओ गॉड सेटा देखिले आखि लाल हे जिवो। सो दे आर एजोडाइज तो एजोडाइज कौन हुए हमर गामछा रंग करे पे यूज करा हुए। तो अब एजोडाइज अगर आप यूज करोगे एजाइड्स आर आमे केमे सेल रे कौन पढ़छ एजाइड्स आर माइटोजेन्स ओके they will stimulate mitosis or some of them are also mitotic poisons तो से माने माइटोसिस को अफेक्ट करेगी। so that is why this will stimulate cancer। बायोलॉजिकल एजेंट्स रे आमे जानिचे प्रोटॉन स्ट्रॉन्ग्स अछि नाउ এই जो बायोलॉजिकल एजेंट्स रे केबे केबे वायरसेस दे आल्सो एक्टिवेट कैंसर प्रोटॉक्स तो एरा सो कार्सिनोजेंस हमर कोल्टार अछि सूट सिगरेट स्मोक कैडमियम ऑक्साइड एफ्लाटॉक्सिन कौन लिवर कैंसर करेबो मस्टर्ड गैस लंग कैंसर निकेल क्रोमियम लंग कैंसर एस्बेस्टस लंग कैंसर डाइथाइल स्टिबेस्ट्रॉल वेजाइनल कैंसर विनाइल क्लोराइड लिवर कैंसर coal tar, cigarette smoke, soot, lung cancer and skin cancer. Tegala? So these are various carcinogenic agents which cause different types of cancer. Clear? So some viruses they are also responsible for activating protons to ox. Tegala? So se mane viruses are also carcinogenic agents. Hela? सिम्पटम कौन हम सिम्पटम्स तमे देखिबो कैंसर रे रैपिड वेट लॉस विदाउट एनी कॉज किछि करूना किंतु ओजन कमी कमी जाउछ हैला तापरे अल्सर्स जोटा ठीक होउन मोल जोटा बड़ी बड़ी जाउछ हेडेक्स डिफिकल्टी इन स्वालोइंग होर्सनेस इन वॉइस हे गेला तो एम सब अलग अलग कारण थिबो नाउ उसके बाद आ जाएगा व्हाट hepatitis B virus, okay, etc. Sorry, coughing of blood, persistent abdominal pain, change in size of testes, blood in urine with no pain, no urine, change in bowel, lump or change in breast, bleeding discharge from nipples, vaginal bleeding, etc. तो यही सब जिनस symptoms अच्छी you can go for check हेगला तो हाउ वी आर डिटेक्टिंग इट तो बायोप्सी करा जीवो तो जो इंजर्ड टिश्यू अछि सेटु बायोप्सी करा जीवो सेइथरे जदी सेल्स कैंसरस देखा जाउची ताहाले वी विल टेक ब्लड और बोन मैरो टेस्ट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर रेडियोग्राफी एक्सरे करके भी हमें जानी परिबा सीटी स्कैनिंग एमआरआई ए सब करी हम ठीक अछि एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेन्स भी करी हबो हैला so these are the cases so how they are treated surgery radiotherapy chemotherapy and immunotherapy so these are different types of treatment आगो रेडियोथेरापी कीमोथेरापी करिवे जदि ठीक हे गेला बढ़िया नहले सर्जरी हैला so these are different types of cancer melanoma skin cancer
adenoma glands, myoma muscle, lymphoma lymphatic tissue, glioma glial cells। तो सब मन रखिब आमर गोटे होची कार्सिनोमा एंड गोटे होची सार्कोमा। तो कार्सिनोमाटा होची स्किन कैंसर माने एपिथेलियल टिश्यू कैंसर एंड सार्कोमाटा कौन कनेक्टिव टिश्यू कैंसर। ओके तो एडा सब मन रख क्लियर। So that's all for now. We can practice some questions, but again it is lunch time. So आमे breakfast कर दो। तो मैंने I will give you a break. It's already 9 o'clock. After we rejoin, आमे question practice करके then we will go to the next. तो मैं खाई के आसा तापर मु बढ़िया बढ़िया drugs तुमको खुआईबी। Okay, and we will discuss in the next class. So I am stopping the lecture for now. You can take rest. या ब्रेकफास्ट कर दिया टॉयलेट जाओ। रिजॉइन इन 15 मिनट्स। तो विल रिजॉइन इन 15 मिनट्स है। ओके बाय।